Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, forest products. A forest has different types of plants. There are tall trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Look at the following picture and write the name of 2 trees, 2 herbs, 2 shrubs, 2 climbers and 2 creepers. The structure of a forest. A forest is an extensive area of land with a thick growth of trees and bushes. It contains a wide variety of organisms. The forests represent a well-organized community of flora and fauna on the earth. Forests are natural treasures providing us with wide variety of essential commodities for our use. Forests are the natural habitats of a wide variety of reptiles, insects and animals, protecting them against the weather and the sun. They play a vital role in maintaining the oxygen supply in the air we breathe, in regulating the climate, controlling floods and preventing soil erosion, silting and landslide. फॉरेस्ट देखिए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारे वहाँ से रिसोर्सेज मिलते हैं, राइट। और आपका फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट हुआ है बहुत सारे इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का, जिनको प्रोटेक्ट करता है वेदर से और सन से, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि क्लाइमेट को रेगुलेट रखते हैं, फ्लड्स कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन. The 3 main layers of a forest starting top to ground are canopy, understory and forest floor. Forest में आपकी different layers होती हैं, तो ये आपके देखिए different layers क्या है आपकी, canopy, understory and forest floor. Canopy layer, the forest top layer consisting of the branches and leaves of tall trees. आपका जो फॉरेस्ट का लेयर होता है, आपका टॉप लेयर होता है जिसमें आपके ब्रांचेस होते हैं, टॉल ट्रीज के लीव्स होते हैं, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ रूफ और अम्ब्रेला ओवर द स्मॉलर ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. ये एक तरह से रूफ या अम्ब्रेला बनाते हैं ओवर द स्मॉल ट्रीज और अदर प्लांट्स. द uppermost branches and leaves of tall trees which act like a roof or umbrella over the smaller trees in the forest is called canopy. It has tall evergreen trees with large green leaves. Number 2, understory layers. The layer of vegetation in a forest which is just below the canopy is called understory. It mainly has large leaf plants and small trees that are able to survive in much less sunlight. अब आपके canopy के नीचे की जो layer है that is understory, इसमें आपके large leaf plants होते हैं और small trees होते हैं. Third is forest floor. This region receives very little amount of sunlight. Only plants adapted to grow with very less light can survive in this damp, warm and dark region of the forest. A large variety of insects, millipedes, ants and beetles are found on the forest floor. The largest animal in the forest such as tigers, lion, deer, bear, etc. live on the forest floor. अब इस region में जो बहुत कम amount of sunlight आता है, तो वही plant जो अपने आप को adapt कर लेते हैं, जो कि इनको जो less लाइट की ज़रूरत होती है वो सर्वाइव कर पाते हैं. तो बहुत तरह के इंसेक्ट, मिलीपीड्स, आंट्स, बीटल्स आपको फॉरेस्ट फ्लोर में पाए जाते हैं. और यहाँ तक कि जो लार्जेस्ट एनिमल है लाइक लायन, टाइगर, बेयर, वो भी आपके फॉरेस्ट फ्लोर में ही रहते हैं. Interdependence of plants and animals in a forest. The plants and animals in a forest depend on each other for their survival. Dependence of plants on animals. Animals produce carbon dioxide during respiration, which is taken up by plants for photosynthesis to produce food. Animals like butterfly, honeybee, birds, bats, etc. help to pollinate flowers in the forest. Animals also help in disposal of fruits and seeds over long distances in the forest. Animal excreta and their dead bodies are converted into humus in the soil by the action of decomposers. The humus act as manure and provide minerals for growth of plants. अच्छा अब देखिए plants and animals एक दूसरे पे dependent है, तो प्लांट्स की डिपेंडेंसी एनिमल्स पे कैसे है. सबसे पहली बात तो एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए. और एनिमल्स बहुत सारे जो हैं फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. एनिमल जो है सीड के डिस्पोजल में हेल्प करते हैं. एनिमल एक्सक्रीटा, उनकी जो डेड बॉडी है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है. डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स. एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. Tall trees give shelter to various animals. Most birds make their nest on branches of trees. Animals like monkeys, apes live on trees. Plants produce oxygen during photosynthesis, which is taken up by animals for respiration. अब देखिए एनिमल्स जो है प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स का तो जो शेल्टर है ये ट्रीज ही होते हैं. प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्रीदिंग के लिए सभी आपके लिविंग बींग्स एनिमल्स को ज़रूरत होती है. Role of decomposers in a forest. The greater humidity and warmth of the forest floor allow bacteria and fungi to flourish in the forest soil. As leaves, trees, other plants and animals die, they all fall on the forest floor.
अच्छा देखिए, क्योंकि फॉरेस्ट फ्लोर में ह्यूमिडिटी वार्मथ होती है तो इसकी वजह से बैक्टीरिया एंड फंगी की ग्रोथ वहाँ पे होती है। तो जब ट्रीज़ के लीव्स हैं या प्लांट्स या एनिमल्स डाई होते हैं तो वह सबके सब फॉरेस्ट फ्लोर पे गिर जाते हैं। The animal waste, animal dung or bird stooping also fall in the forest floor. The microorganisms like bacteria feed upon the dead plants and animals' tissue and waste and convert them into a dark colored substance called humus. The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. The humus contains nutrients like nitrogen and phosphorus etc. derived from dead plants and animals. When humus mixes with forest soil, the soil gets nutrients. These nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. In this way, the nutrients are cycled. So nothing goes waste in a forest. Decomposers are a kind of cleaning agents of the environment. तो देखिए, जो आपका एनिमल वेस्ट होता है वो भी आपका फॉरेस्ट फ्लोर पे गिरता है। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, ये जो आपके डेड प्लांट्स या एनिमल टिश्यूज होता है या वेस्ट होता है, उसको एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमस, राइट। ह्यूमस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आपका कुछ भी फॉरेस्ट में वेस्ट नहीं होता और डिकम्पोजर एक तरह से एनवायरमेंट के क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। Importance of forest. Forests provide us with many things we need. Besides, they play a very important role in maintaining the environmental balance. Let us understand how forests are important to us. Forest as a source of firewood. For many parts of the world, wood is still a chief fuel for cooking food and for heating purposes. In our country, wood fuel provides about 43% of the total energy consumed. When wood is converted into charcoal, the fuel efficiency improves. अच्छा देखिए, अभी भी वर्ल्ड के बहुत पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो मेन फ्यूल है वो आपका क्या है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए आपका वुड ही है। Forest as a source of fodder. Forest as an important source of fodder for cattle and other grazing animals. There are many varieties of grasses, trees and shrubs that are nutritious for livestock. अब देखिए, सोर्स ऑफ फॉडर जो है, फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉडर है जो अपने कैटल के लिए या ग्रेजिंग एनिमल को खाना प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. Since time immemorial, humans have been dependent on herbs and plants from forests to cure themselves of various ailments. The list of medicinal plants used in traditional practices long. तुलसी, नीम, अश्वगंधा एंड गार्लिक आर ओनली अ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। अब देखिए, प्लांट्स आपके कुछ ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिनकी हेल्प से मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके तुलसी, नीम, अश्वगंधा एंड गार्लिक। Forest has maintained water cycle in nature. Through the process of transpiration, the plants, trees and shrubs in forest return huge amounts of water to the atmosphere. फॉरेस्ट जो है वाटर साइकिल को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट एज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ टॉप fertile soil from a region by wind, rain or running water is called soil erosion. Forest prevents soil erosion. The roots of trees bind the soil and save it from being washed away by water or rain or blown away by the wind. The forest prevents soil erosion and help in the conservation of soil. अब देखिए, फॉरेस्ट जो है आपके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं और वो इजीली विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू ब्लो ऑफ नहीं होती है। Forest as provide food and shelter to forest dwelling people. Many tribal people of a country live in forest. The forest provide them with food, shelter, water and medicines. अब बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको सारी चीज़ें लाइक फूड, शेल्टर, वाटर ये सारी कहाँ से मिलती हैं? आपके फॉरेस्ट से। Deforestation and its causes. Clearing a forest by cutting trees to fulfill our need of wood and land is called deforestation. The various causes of deforestation are increase in population. With the increase of population accompanied by technological advance, more and more land is required for housing, colonies, industries, educational institutions, offices, etc. Forest area is cleared to obtain this land. अच्छा देखिए, डिफॉरेस्टेशन उसके कॉजेज़ क्या हैं? एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखिए हाउसिंग की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं जिससे कि हमें लैंड मिल सके। Wood for industries. With the increase of population and better standard of living, the demand for the wood in that industries has increased many times for making various wood products, leading to the depletion of forest. Construction of dam. A large forest area has to be cleared to construct a dam. Forest fires. Once the forest fire starts, does not stop easily and many trees are burned. अब देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बेटर हो रहा है, तो वुड की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ में, और वो आपको कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट को कट करके। अगर डैम कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए पहले फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और जैसे फॉरेस्ट फायर कभी लग जाती है तो ईजिली स्टॉप नहीं होती, इसमें बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं वो आपके जल जाते हैं।
Effects of deforestation. Deforestation causes soil erosion, leading to loss in the fertility of soil. Deforestation causes change in the rainfall pattern. The area receives less rainfall, causing drought condition. Burning of wood obtained from deforestation causes increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Excess of carbon dioxide causes air pollution. Carbon dioxide is a greenhouse gas and causes global warming. In the absence of trees of the forest, the rainwater flows faster, causing flood conditions. Deforestation causes adverse climatic changes. The climate becomes warmer and drier in the absence of humidity in the deforested area. In the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter. अब देखिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है. अब वुड को जलाया जाता है जो आपके डिफॉरेस्टेशन से ऑब्टेन होते हैं, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है. ट्रीज़ की एब्सेंस में जो रेन वाटर फ्लो हो रहा है आपका फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड कंडीशंस आ रही हैं. डिफॉरेस्टेशन की वजह से एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, और ट्रीज और प्लांट्स की एब्सेंस में जो है एनिमल्स को ना तो फूड मिलेगा ना ही शेल्टर मिलेगा. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. Since forests are very beneficial to us, other animals and the environment, we must conserve our forests. Some of the ways to conserve forests are given below. Excessive cutting down of forest trees should not be allowed by the government. Tree for a tree principle should be adopted for every tree that has been fallen. A new tree should be planted. Paper products such as old newspapers, magazines, books and notebooks, etc. should be recycled to conserve forest. अब देखिए जो एक्सेसिव कटिंग जो हो रहा है फॉरेस्ट ट्री का, डिफॉरेस्टेशन, गवर्नमेंट को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए. ट्री फॉर अ ट्री प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना है, मतलब अगर आप एक ट्री काट रहे हैं तो एक ट्री बदले में लगाएं भी. पेपर जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको रिसाइकिल कर सकते हैं और ऐसा करके आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. Wood as a fuel should be discouraged. Any breakout of fire in the forest should be fought quickly using modern methods. अच्छा, आपका जो wood as a fuel उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और कोई भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है, फायर लग जाती है फॉरेस्ट में, तो उसके साथ मतलब मॉडर्न मेथड के साथ उसके क्विकली उसका समाधान ढूंढना चाहिए. Afforestation. With the growing awareness among people, the importance of trees is realized. Special drives of planting more and more trees to save environment from the bad effects of deforestation is called afforestation. Thus, it becomes a moral duty to conserve forest and protect our environment for the benefit of a future generation. तो देखिए अब trees के, forest के कितना importance है हमारे लिए, right? अब सबको रियलाइज़ हो चुका है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए. सभी को पता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो जो बैड इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, उसको कम करने के लिए हमें करना चाहिए एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. Case study. The Chipko movement was started in 1972 by illiterate tribal people in Tihri district of Uttaranchal under the leadership of Sundarlal Bahuguna. This movement was aimed at saving trees from the aches of greedy contractors. Led by a Gandhian and using strategies of non-violent protest, the local forest dwellers hugged the trees so that they could not be cut down. Chipko means to hug. The movement spread through the foothills of the Himalayas to other places of India as well as to save forest from further degradation. Chipko movement आपका 1972 में स्टार्ट हुआ था. टिहरी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उत्तराखंड के, सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में उन्होंने शुरू किया. इसमें क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो पेड़ों को काटना चाहते थे आपके फॉरेस्ट के, तो सभी लोगों ने क्या किया कि एक नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया. सभी लोग जो थे वो पेड़ों को उन्होंने हक कर लिया और इसीलिए उसको नाम दिया गया चिपको. चिपको मीन्स टू हग. और इस तरह से क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है, बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो कटने से बच गए. नोट्स फॉर द चैप्टर. Forest is a large area of land where a large number of tall trees, herbs and shrubs grow naturally. Canopy is the covering of large trees that serve as a roof to shelter an area or other plants in forest. In a forest, the tall trees from the top layer, which is followed by shrubs and then herbs, which form the lowermost layer of vegetation. The vegetation in a forest provides shelter to various animals, birds and insects. It maintains the balance of nature. All the components of forest are interconnected with each other in the form of food chain. Decomposer increases soil fertility. They convert dead plants and animals into humus. Forests are called green lungs. To maintain the delicate balance of nature, it is necessary to save forests and not to destroy them to meet the ever-increasing demands of human beings. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. I hope आपको trees and forest का importance पता चला होगा. And इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.